is Jojo. What's up? This is so highly requested. Like I can't do a poll lately without several of you guys sending a request for the song. So lovely. It's my first. No, is it my first time covering Arpit Bala? 1 second. I think I have covered him before in a song called Maharani. Yeah, yeah. I have Karun, Lambo Drive, Arpit Bala, and Revo Lekhak. This was a while ago. God damn. When was this? A year ago. Okay. Jan 2024. Yeah. Okay, cool. It's been a while, but this is highly requested. I don't know what it's all about. We will figure that out. Performed by Arpit, AOD, Angad Virk, produced by AOD and Angad, composed by Arpit, AOD and Angad, written by Arpit, mixed by Akash Rao and mastered by Akash Rao. Lovely. Iska visualizer hai, and we are going to get right into it. Kya Tu Theek Hai. Sounds like a nice emo title. Let's see what the song is about. Rolex. Date just. Voice stub of picture. Okay, interesting. 1, 2, 3, play. देखूं वक्त बदलते मैं ये 10 गर्मियों में कंधे छाती बढ़ गई है जी रहा तू सपने तू झांकता मैं पटकता फिर भी तू सही से मैं मांगता था मन्नते वो सपने जीना देख ले वो झूठा प्यार झूठे गाने सुनने के बहाने छूटी जॉब जिसका चेक सड़े इस जेब में क्यों कट गई कॉल जिसके बाद जे चल दिए वो उनके शब्द कि तुम भी हमको भूल गए तो मैं पूछता हूँ तुझे बताता नहीं माँ से ही कहता हूँ कि तुझे पूछ ले कहीं कि क्या तू ठीक है कि तेरी याद आ रही है क्या तू ठीक है कि क्या मैं याद भी नहीं हाँ मैंने सुना तूने पीना छोड़ दिया तभी रोता नहीं क्योंकि आंसू मांगते हैं पानी मैंने देखा तेरे भाइयों ने मुंह फेर लिया करे किश्तों में भाईचारा वो कस्मों का व्यापारी 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 अब मैं तोल के महसूस करता दर्द झूठा प्यार कल के खौफ अंधी गाली के बदले में गिनता नोट किए छाप छूटे पैरों की तो नाइकी देखे बॉस अ फोटोजेनिक कॉस्ट टू लिव अ लाइफ विदाउट अ फियर ऑफ गॉड टिल आई डाई बड़ी जेब के वो खौफ लेके साइड हो गए भाई अब मैं कौन किसको बदलूं मैं पैसों के बदले की ना बदले रंग मेरे भाई इनको आवाज नहीं पसंद मेरी ये शोर मचा रहे हैं मेरी घड़ी नहीं बची क्योंकि ये वक्त बदल डाले कैसे जूतों को ये देख के मेरी चाल से जले हैं तभी सीन पे मैं मुंह तू लेके पैसों पे टेक मैं मेरे वक्त से लड़ा चुरा के बाप की घड़ी और अब वो पूछते हैं मुझसे कैसे बाप से बनी क्योंकि ये हाथ पे है मैल घड़ी हाथ से बड़ी और झूलती है हाथ पे जैसे बाप की घड़ी तो मैं पूछता हूँ तुझे बताता नहीं मैं से ही कहता हूँ कि तुझे पूछ ले कहीं कि क्या तू ठीक है कि तेरी याद आ रही है क्या तू ठीक है कि क्या मैं याद भी नहीं तो मैं पूछता हूँ तुझे बताता नहीं मैं से ही कहता हूँ कि तुझे पूछ ले कहीं कि क्या तू ठीक है कि तेरी याद आ रही है क्या तू ठीक है कि क्या मैं याद भी नहीं तू जला के मेरा सर मुझसे पूछ के तू देख नहीं रोता तेरे सामने तू मुड़ के तो देख तू झांक लियो मुझ में फिर चाहे मुझे बेच पर एक ना तो एक बार पूछ के तो देख क्या मैं ठीक हूँ या मैं टूट सा गया हूँ इन पागलों में बैठे बैठे ऊब सा गया हूँ तू पूछ के तो देख किन झूठ पे भला हूँ वो भ्रम पाले कैसे मैंने खुशी से बता दूँ तो क्या ठीक हूँ मैं क्योंकि ठीक नहीं है कुछ हाँ ठीक तेरे लिए शायद बांट लेना दुख तो क्या तू ठीक है तो क्या तू ठीक है तो क्या तू ठीक है तो क्या ठीक हूँ मैं क्योंकि ठीक नहीं है कुछ हाँ ठीक तेरे लिए शायद बांट लेना दुख तो क्या तू ठीक है तो क्या तू ठीक है तो क्या तू ठीक है क्या ठीक हूँ मैं क्योंकि ठीक नहीं है कुछ हाँ ठीक तेरे लिए शायद बांट लेना दुख तो क्या तू ठीक है तो क्या तू ठीक है तो क्या तू ठीक है तो क्या ठीक हूँ मैं क्योंकि ठीक नहीं है कुछ हाँ ठीक तेरे लिए शायद बांट लेना दुख तो क्या तू ठीक है तो क्या तू ठीक है तो क्या तू ठीक है It's heavy, man. Oh,
That was really heavy. I feel like this was obviously between a father and son. And these are my thoughts. I could be wrong at any points, but it is I feel like this is I felt and I still feel like I'm not 100% sure about this, but I felt like the first part of it was his father talking to him, asking him kya tu theek hai, and he's like, I don't know. I asked your mom to ask you if you're okay. And then after the hook sort of happened, then the voice kind of changed and it felt like it's him talking. He's talking about what's happening in his life and what's happening. Um, and and then it went back. I can't put my finger on it. I feel like it went back to his dad talking, or it क्या तू ठीक है और अब yeah, he's talking about his life and his halat, and then the क्या तू ठीक है आ नहीं याद आ रही है तो मैं पूछता हूँ तुझे बताता नहीं माँ से ही कहता हूँ that I feel is his father. मुझे फिर चाहे मुझे क्या मैं ठीक हूँ. So I feel like I could be wrong. It could be either way. You can flip it from it could start with father to son or be son to father, and it could flip. I just feel like it is a very, very important song because it's going very deep into the male psyche, and it's going very deep into the lived realities of a guy, and it's just exploring it from so many different angles that it just really just broke my heart listening to this. And the ghadi was a very, very beautiful symbolic um thing in the visualizer, especially when it speeds up, and it just like so many layers to that visualization and so many different meanings you can take out of it. I'm gonna actually listen to this song one more time so I can try and figure it out because it's still puzzling me a little bit, but it just broke my heart. And in the towards the last like 30% of it, and so it's 333, I feel, for a reason. Is it divided by 111 111? Is that how the division of the sections has happened? I don't know. I'll have to see. But the last one third of the track with the distortion happening in the music, and then the repetition of the Kya Tu Theek Hai chorus lines was just heartbreaking. It was just heartbreaking, man. I'm feeling very heavy. I'm feeling very heavy after listening to this, but I still want to listen to it again because I feel it's a beautiful work of art. And I want to try and understand it better. After one listen, it's still leaving me slightly puzzled. So bear with me um while I try to understand this better. 1, 2, 3, play. देखूं वक्त बदलते मैं ये 10 गर्मियों में कंधे छाती बढ़ गई है जी रहा तू सपने तू झांकता मैं पटकता फिर भी तू सही से मैं मांगता था मन्नते वो सपने जीना देख ले वो झूठा प्यार झूठे गाने सुनने के बहाने छूटी जॉब जिसका चेक सड़े इस जेब में क्यों कट गई कॉल जिसके बाद जे जे चल दिए वो उनके शब्द कि तुम भी हमको भूल गए तो मैं पूछता हूँ तुझे बताता नहीं माँ से ही कहता हूँ कि तुझे पूछ ले कहीं कि क्या तू ठीक है कि तेरी याद आ रही है क्या तू ठीक है कि क्या मैं याद भी नहीं हाँ मैंने सुना तूने पीना छोड़ दिया तभी रोता नहीं क्योंकि आंसू मांगते हैं पानी मैंने देखा तेरे भाइयों ने मुंह फेर लिया करे किश्तों में भाईचारा वो कस्मों का व्यापारी कस्मों का व्यापारी कस्मों का व्यापारी Sounding too loud. कस्मों का व्यापारी कस्मों का व्यापारी अब मैं तोल के महसूस करता दर्द झूठा प्यार कल के खौफ अंधी गाली के बदले में गिनता नोट किए छाप छूटे पैरों की तो नाइकी देखे बॉस अ फोटोजेनिक कॉस्ट टू लिव अ लाइफ विदाउट अ फियर ऑफ गॉड टिल आई डाई बड़ी जेब के वो खौफ लेके साइड हो गए भाई अब मैं कौन किसको बदलूं मैं पैसों के बदले की ना बदले रंग मेरे भाई इन
को आवाज नहीं पसंद मेरी, ये शोर मचा रहे हैं, मेरी घड़ी नहीं बची क्योंकि ये वक्त बदल डाले, कैसे जूतों को ये देख के मेरी चाल से जले हैं, तभी सीन पे मैं मुंह तू लेके पैसों पे टेक, मैं मेरे वक्त से लड़ा चुरा के बाप की घड़ी, और अब वो पूछते हैं मुझसे कैसे बाप से बनी, क्योंकि ये हाथ पे है मैल घड़ी हाथ से बड़ी, और झूलती है हाथ पे जैसे बाप की घड़ी। तो मैं पूछता हूँ तुझे बताता नहीं, मैं से ही कहता हूँ कि तुझे पूछ ले कहीं कि क्या तू ठीक है, कि तेरी याद आ रही है क्या तू ठीक है, कि क्या मैं याद भी नहीं। तो मैं पूछता हूँ तुझे बताता नहीं, मैं से ही कहता हूँ कि तुझे पूछ ले कहीं कि क्या तू ठीक है, कि तेरी याद आ रही है क्या तू ठीक है, कि क्या मैं याद भी नहीं। तू जला के मेरा सर मुझसे पूछ के तू देख, नहीं रोता तेरे सामने तू मुड़ के तो देख, तू झांक लियो मुझ में फिर चाहे मुझे बेच, पर एक ना तो एक बार पूछ के तो देख, क्या मैं ठीक हूँ या मैं टूट सा गया हूँ, इन पागलों में बैठे बैठे ऊब सा गया हूँ, तू पूछ के तो देख किन झूठ पे भला हूँ, वो भ्रम पाले कैसे मैंने खुशी से बता दूँ, तो क्या ठीक हूँ मैं क्योंकि ठीक नहीं है कुछ, हाँ ठीक तेरे लिए शायद बांट लेना दुख, तो क्या तू ठीक है, तो क्या तू ठीक है, तो क्या तू ठीक है, तो क्या ठीक हूँ मैं क्योंकि ठीक नहीं है कुछ, हाँ ठीक तेरे लिए शायद बांट लेना दुख, तो क्या तू ठीक है, तो क्या तू ठीक है, तो क्या तू ठीक है, क्या ठीक हूँ मैं क्योंकि ठीक नहीं है कुछ, हाँ ठीक तेरे लिए शायद बांट लेना दुख, तो क्या तू ठीक है, तो क्या तू ठीक है, तो क्या तू ठीक है, तो क्या ठीक हूँ मैं क्योंकि ठीक नहीं है कुछ, हाँ ठीक तेरे लिए शायद बांट लेना दुख, तो क्या तू ठीक है, तो क्या तू ठीक है, तो क्या तू ठीक है। This really broke my heart. So I feel like after listening to it for the second time, he is talking to his dad in the first bit and saying he I heard this and I asked mom to check on you, and I heard you stop drinking, you don't cry anymore, and your brothers sort of uh, left you or stopped talking to you because they're only concerned about money. So that was the line that made me think, oh no, this he's saying to his father, because ऐसा normally, आपसे older generation में होता है. It's not something the father would say to him. So that line is what made me get that. I'm just feeling very heavy after this. And then I feel he's talking about his own life and talking about how he's making something out of himself, and just living life among the real world today, where the shoes and the this and the that, all those things. There were some very like nice real lines there which I liked. छोटा प्यार करके कौवा बांधी गाली के बदले में गिनता नोट की छाप, पैरों की तो नाइकी दिखे बॉस, a photogenic cost to live a life without a fear of God. That's another brand name, right? Till I die, बड़ी जेब के वो खौफ लेके साइड हो गए भाई, अब मैं कौन किसको बदलूं मैं पैसों के बदले की ना बदले रंग मेरे भाई. Mm, then they don't like my own, मेरी घड़ी नहीं पची क्योंकि ये वक्त बदल डाले. um मैं देखे मेरी चाल से जले हैं, तभी सीन पे मैं वक्त से लड़ा. So he's talking about how he sort of made his place in the world and how people are now jealous of his success. उससे कैसे बाप से बनी क्योंकि ये हाथ पे है मैल घड़ी हाथ से बड़ी, और झूलती है हाथ पे जैसे बाप की घड़ी. तो मैं पूछता हूँ तुझे बताता नहीं, माँ से ही कहता हूँ. And then when the distortion starts and he talks about कि मुझसे पूछ लो, सर पे झाँक लियो मुझ में फिर चाहे मुझे भेज, पर एक ना तो एक बार पूछ के तो देख क्या मैं ठीक हूँ. Oh, sorry, I'm just reading the lines and I'm just like, वो भ्रम पाले कैसे मैं खुशी से बता दूं तो क्या ठीक हूँ मैं क्योंकि ठीक नहीं है कुछ, हाँ ठीक तेरे लिए शायद बांट लेना दुख, तो क्या तू ठीक है, तो क्या तू ठीक है. Oh man, okay, this is really really heartbreaking. I'm just gonna uh
मैंने देखा तेरे भाइयों ने मुंह फेर लिया, करे किश्तों में भाईचारा वो कस्मों का व्यापारी. This was beautiful. I feel this is such an. I don't know anything about him or his relationship with his father, or how real of a place this is coming from, like real life incidents. I'm sure it's coming from a very very real place. I'm just saying, the real life sort of um, incidents that may have led up to writing this song. I can only imagine the pain and the sort of the loneliness in a way, and the sort of just like angst, and there's a different kind of hollowness that one lives with when they are not on good terms with a parent, and those who've never had that will never really truly get it. But there's a reason that when both your parents are with you and have got your back and you've got their back, when that kind of reality exists for you, there's a different level of peace and calm that you move with through the world, as you wade through the world. You have that sort of feeling of having a rock. And when that is shaky, and when that is not, a steady rock that plays for you, I can only imagine the level of like inner sort of emptiness that brings. So there is a lot of that in this song. It's coming from a very, very uh man, that that child in you craving that security blanket, that space. And it's just very, 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 very um gut wrenching to listen to and to hear. So, but I'm glad he wrote it. I'm glad he wrote it. I'm glad he got it out. It must have been a very, very difficult song to pen. And ठीक तेरे लिए शायद बांट लेना दुख तो क्या तू ठीक है. Therapeutic. I hope it was therapeutic for him, and I hope it was um something that led to bridges being mended. You know, that's my only hope. Maybe I'm reading it wrong. Maybe I understood it wrong. But what I did take away from it is that it's coming from a very deeply uh, man, it takes a lot of guts to put something like this out in the universe after you've even written it. So I doff my hat to that level of courage, and this is going to impact a lot of people. So again, at the cost of putting your vulnerable self out there, um, you are going to help a lot of people who are probably facing similar situations in their life, and it's going to be therapeutic for them. And I hope more than just feeling therapeutic, it provokes them to take action and fix certain areas of their life if they can be fixed, because there's nothing hold on, there's nothing more powerful or um better than having an amazing relationship with both your parents and them being that rock solid presence in your life. There's nothing better than that, and my heart goes out to anyone who doesn't have a parent or parents. But if you have your parents in this world, then maintaining that relationship, those relationships, um, is the most important thing. Period. Like nothing else is more important in the world. So, oh man, I'm sorry, I'm just going on, but this is a very, very pure song. So, um, thank you guys for suggesting it. Thank you, Arpit Bala, for creating it and for putting your heart out there the way you've done. And if I misunderstood any aspect of it, please comment below and let me know. And yeah, I that's it. I can't say anything more. I'll see you guys in the next one. Take care of yourselves. Live long and prosper.